Welcome to the front page vocab, and in this episode, I am going to tell you how the US announced $150 million for H-1B visa workforce program, and the college students, school dropouts, and women lead the farm protests in Punjab. So first of all, talking about the world news first, तो यूएस ने अनाउंस किया है 150 बिलियन मिलियन यूएस डॉलर्स जो H-1B वीज़ा को ट्रेनिंग देने के लिए. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इट इज़. The United States announced 150 million US dollars on Thursday to invest in training for middle to high skilled H-1B occupations in key sectors in the American economy. Occupations होते हैं एक डिफरेंट फील्ड. ठीक है, की सेक्टर्स होते हैं कि जो बहुत बड़े सेक्टर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग हुआ. ठीक है, प्रोमिनिएंट अमंग दीज सेक्टर्स आर, प्रोमिनिएंट मीन्स की मेजर, IT, information technology, cyber security, advanced manufacturing, transportation, wherein the H-1B1 workforce grant program would be used to upskill. Upskill मतलब improve करना skill को. The present workforce and train a new generation of workers to grow the future workforce, the Department of Labor said. Okay, the coronavirus pandemic has not only caused disruptions. Disruptions मतलब कोई problem खड़ी करना, but also faced many education and training providers and employers to rethink. Rethink मतलब फिर से सोचना. How to deliver training, the department said in a statement. In this grant program, the department's employment and training administration has set out to streamline funding. Streamline मतलब कि एक constant flow and resources to encourage a more integrated मतलब कि एक particular system, integrated workforce system that will push the applicants to provide an innovative mix of training strategies, leveraging innovative modes of training delivery. Leveraging means making use of, including online distance and other technology enable learning थ्रू लोकल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स. ये आपने कई बार सुना होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. इसका मतलब होता है इसमें गवर्नमेंट की भी एक स्पेसिफिक परसेंटेज होगी इस पार्टनरशिप में, और प्राइवेट कंपनीज की भी होगी. द गारंटीज विल डिप्लॉय मीन्स प्रोवाइड to provide individuals in their communities with skills necessary to advance career pathways to employment in middle to high skilled H-1B occupations within key industry sectors. The training models will include a broad range of classroom, on the job training, customized training, incumbent worker training. एक्चुअली मुझे अभी याद नहीं इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है. लेट्स सी, इनकम्बेंट इज necessary. Okay, all right, so it is necessary worker training. Registered apprenticeship, apprentice होते हैं जो भी ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है, अपने सीनियर से. एंड इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड apprenticeship programs. Okay, the US Department of Labor is challenging communities to think as one workforce. Assistant Secretary for Employment and Training John Falish said, in the current job environment, it is critical that local organizations work as one instead of independent parts of a process. Our goal is to create seamless. Seamless means कि लगातार होना. ठीक है, community partnerships to build career pathways for local job seekers to enter middle to high skilled occupations in the cybersecurity, advanced manufacturing, and transportation sectors. Okay. Public-private partnerships will leverage resources across federal, state and local funding streams. फेडरल होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, अमेरिका कनाडा में उसे फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं. स्टेट जैसे स्टेट हो गया. लोकल मीन्स एक सिटी या एक स्पेसिफिक एरिया, ठीक है, जो कि स्टेट से स्मॉल होगा. as well as from the private sector to support training, employment services and supportive services to maximize access to employment opportunities, the official statement said. These partnerships will work toward a coordinated approach to preparing a skilled workforce within economic region. ओके, सो आगे कोई और वर्ड नहीं है. सो इसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज one of the major
News: college students, school dropout, women lead farm protests in Punjab. So let's see. At the forefront of several protests by farmers in Punjab on Friday were some unusual figures. Unusual मतलब जो कि आमतौर पर figures नहीं दिखते. Two 20-year-old college students, a 33-year-old activist, and a teenage school dropout, all women. ठीक है, सारे के सारे वुमेन थे. दो 20-year-old कॉलेज स्टूडेंट्स थे, एक 33-year एक्टिविस्ट एंड अनदर अ टीनेज स्कूल ड्रॉप आउट. They raised slogans of revolution and addressed large, mostly male gatherings of farmers at which they delivered passionate. Passionate means कि उनमें पूरे जोश भरपूर था. Critics of the center's agricultural policies, और उन्होंने सेंटर की जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी है उसे क्रिटिसाइज किया. पंजाब एंड हरियाणा वर द एपी सेंटर ऑफ नेशन वाइड प्रोटेस्ट. एपी सेंटर मीन्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट किए गए हों इस सिचुएशन में. ठीक है, एपी सेंटर होता है सेंट्रल पॉइंट. बाय ओवर 350 फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी. अम्ब्रेला मीन्स हम कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक जो है कमेटी के नीचे वो सारे 350 या 350 फार्मर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो उन्होंने मिलकर एक सिंगल कमेटी बनाई अगेंस्ट द 3 फार्म बिल्स दैट वर पास्ड बाय पार्लियामेंट. थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स ब्लॉक्ड रोड्स को उन्होंने बंद कर दिया, हाईवेज को बंद कर दिया इन सेवरल स्टेट्स एंड वर सपोर्टेड बाय अपोजिशन पार्टीज सच एज कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस एंड आरजेडी एज वेल एज 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस. Farmers fear the new legislation means legislation होता है रूल या लॉ will pave the way. Pave the way means कि रास्ते को बना देगा. किस रास्ते को? डिसमेंटलिंग इज खत्म करना ऑफ एमएसपी regime. एमएसपी का जो टाइम है जो आज तक चल रहा है उसे खत्म कर देगा. एंड थ्रो देम एट द मर्सी ऑफ बिग कॉर्पोरेट्स. मर्सी मीन्स दया. जो कि बड़े कॉरपोरेट होंगे उनको वही करेंगे जो वो करना चाहेंगे. बिग कॉरपोरेट्स उनकी दया के ऊपर ही फार्मर्स रह पाएंगे. इन महाराष्ट्र डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ऑफ द एनसीपी एंड द कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड रेवेन्यू मिनिस्टर बाला साहब थोराट सेड द स्टेट माइट डिसाइड टू नॉट इम्प्लीमेंट द बिल्स. महाराष्ट्र में शायद वो इम्प्लीमेंट ना करें. ठीक है, नॉट इम्प्लीमेंट मतलब लागू ना करें. छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैज सेड द सेम एंड द गवर्नमेंट इन पंजाब इज understood to be considering the option of declaring the entire state as principal mandi yard to get around the laws. So जो पंजाब क्या सोच रहा है कि सारी की सारी स्टेट को ही एक मंडी बना दी जाए ताकि लॉ वहाँ पर लागू ही ना हो सके. केरला will challenge the laws in the Supreme Court. So the next is slogan, or we can say a description set by Sumandeep Kaur, a final year undergraduate student of mass communication. And she has said, it is on this land that revolution is born, history changes when Punjab awakens. Awakens means jaag jana. So Sumandeep, the daughter of a marginal farmer from Sahor village in Barnala, spoke at protest gatherings in Mahal Kala, Chabba, Raikot and several other villages in the district on Friday and addressed dharnas organized by BKU Nakonda. She has begun going to protests and morchas with her father Keval Singh since the time she was 5 years old. Sumandeep said, I study at Punjabi University Patiala, but I have been home since the novel coronavirus epidemic began. I understand the farm bills when we have no issues with the Arthiyas. What is the government's problem? And they are not even ending this system. They are only replacing the Arthiyas with contract farming companies. The middleman will always be there. So the middleman is always being there. It is said by her. Neil Kamal, also 20, and a final year student at GNDU Amritsar, organized protests in 6 villages in Barnala. Her father is an activist, but Neil Kamal was on her own Friday as he was visiting other villages.
We belong to Tikriwal, the village of freedom fighter Seva Singh Tikriwal. Revolution runs in our blood, she said. She told the Indian Express over the phone. Okay, so next is this news is really big. इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. And if you find any other word, please comment on this video. News about the Canada immigration of IELTS videos and the review videos of IELTS exams, please consider subscribing and do give a like to this video so that more people can watch this. Thank you.